Hello everyone, welcome to Saurav Sir classes. This is the question from the GATE 2026, question number 55. जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एक पूरा प्रॉब्लम दिया गया है. पूरा आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में बना के दिया गया है. सिर्फ आपको जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखना पड़ेगा. सो आप अगर अच्छे से नोटिस कीजिएगा, सो दिस इज अ जॉर्डन ब्लॉक. ओके, दिस इज अनदर जॉर्डन ब्लॉक. And this is the another Jordan block. So we see that the algebraic multiplicity of the eigenvalue 2 is 4. तो हम लोग को geometric multiplicity निकालना पड़ेगा. If so, we know that there's a simple formula. If J is Jordan canonical form, then geometric multiplicity of an eigenvalue lambda is nullity of A minus of A means J minus of lambda I. This is the जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. अगर हम लोग J माइनस लैम्डा आई किए तो उसका जो नालिटी मिलेगा मैट्रिक्स का, वही इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा. सो हियर लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे J माइनस ऑफ 2i. तो क्या होगा मैट्रिक्स J माइनस अगर 2i करेंगे तो ये होगा 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. This will be 0 0 0 1. Okay, 0 0, and the fourth row is 0 0 0 0 0 0. The last one is this. 3 minus 2 is 1. This is 1, and the sixth row is 0 0 0 1. This is the मैट्रिक्स J माइनस ऑफ 2i. अब देखिए इसका नलिटी होगा, दैट मीन्स द नलिटी ऑफ J माइनस 2i, दैट मीन्स द नंबर ऑफ जीरो रोज. तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो रोज क्या है? सो दिस इज 1 2, and all the other remaining rows are linearly independent to each other. Therefore, the nullity of J minus 2i is J minus 2i is 2. Therefore, geometric multiplicity of 2 is 2. So this is the answer. This is a very good question. A question marks 2 था एग्जाम में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया था. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट इन द एग्जाम. दिस इज बिकॉज द आपको देखिए एग्जाम मतलब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस बार के क्वेश्चन में और कोई क्वेश्चन में नहीं दिखा. दिस इज डायरेक्ट दिया गया है, और एक तो इंडिशियल इक्वेशन का था जो भी पूरा डायरेक्ट दिया गया है, एंड दोनों क्वेश्चन ही 2 मार्क्स में था. तो दिस इज द सो स्कोरिंग क्वेश्चन. सो आंसर इज 2. थैंक यू.